who defeated Nawab Siraj-ud-Dौla at the Battle of Plassey in 1757? किसने हराया सिराजुद्दौला को? लोग कहते हैं अंग्रेजों ने हराया, पर मैं कहता हूं कि अंग्रेजों ने नहीं हराया, उसके अपने लोगों ने हराया. द करप्शन, द ट्रेचरी दैट हैज इनफिल्ट्रेटेड द नवाब्स आर्मी, इट्स ब्यूरोक्रेसी, इट्स सिस्टम, उसने हराया. ये तो बाहर की जो गंदगी थी जो उसके सिस्टम में घुस गई, इसकी वजह से नवाब हार गए. सो इट वॉज द water, the dirty water that got into the ships, which made the ship sink. This could have been the anecdote based on which you could have started this essay that UPSC asked in the year 2020. Ships do not sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. अब इसको लिखने के लिए सबसे पहली बात, यू नीड टू डीकोड और अंडरस्टैंड इट्स की टर्म्स. की टर्म्स को डीकोड करने का मतलब है कि जो मेजर वर्ड्स हैं उसके कितने मीनिंग निकल सकते हैं, उसके कितने डायमेंशंस बन सकते हैं. वी विल नॉट गो एज द लिटरल मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. लिटरल मीनिंग जाएंगे तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, तो हमें देखना होगा कि ये जो वर्ड्स हैं इसके कितने मीनिंग अलग अलग तरीके, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में निकल सकते हैं. तो सबसे पहली बात, शिप्स. शिप्स का मतलब क्या हो सकता है? शिप्स कैन मीन इंडिविजुअल्स, ships can mean individuals, it can mean institutions, it can mean societies, it can mean nations, right? It can mean anything that is trying to navigate through uncertainty. Water around them. What this could mean, water around them, means some external challenges. External challenges, बाहरी जो challenges हैं, जो हमारे अंदर नहीं हमारे बाहर हैं. Institutions के बाहर के challenges, society के बाहर के challenges, individual के बाहर के challenges, ना कि individual के अपने अंदर के challenges. Criticism, crisis, criticism. It could mean the failure, right? failure का मतलब, failure हो सकता है इसका मतलब. failure हमें एक बाहर से, बाहर का सिस्टम द्वारा थोपा गया एक, आप कह लो कि ऐसा सर्टिफिकेट है जो हमारे माथे पे लग जाता है और हम मान लेते हैं कि हम फेल हो गए हैं. It can also mean adversity. These could be the probable meanings of water around them. Then water that gets into them. Water that gets into them. What it could mean? It can mean internalization of external challenges. This can mean internalization of external challenges. It can mean the fear, the negativity. It can also mean the insecurity. है कि नहीं? अगर ये सारी चीजें हमारे बाहर के challenges के basis पे, if we are internalizing or incorporating or inheriting the fear, the negativity, the insecurity, तो obvious सी बात है हमारा परफॉर्मेंस तो इम्पैक्ट करेगा. अगर हमें कोई रोज आकर के बोले कि यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और अगर उस डर में हम जीने लगे तो जाहिर सी बात है हम कभी वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाएंगे. इट कैन ऑल्सो मीन कॉम्प्लेसेंसी. आप कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं चीज़ों को लेकर के, मतलब आप खुश हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि यार आई एम कैपेबल इनफ टू डू एनीथिंग, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब आपके अंदर इतना ईगो टाइप सिस्टम आ गया आपके अंदर कि आपको लगता है कि यू कैन डू एनीथिंग, आपको कोई ज़्यादा एक फट लगाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसको लेकर के एक तरह से एक संतुष्ट टाइप के हैं और आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. इट कैन ऑल्सो मीन लॉस ऑफ पर्पस. A society which is
running based on orthodoxical system, orthodoxical beliefs, and it has no purpose as such to advance or to modernize its system, that society is doomed to fail. The rules, the institutions of that society are doomed to fail. So these could be the basic meanings. Now one word is sink. The sink word has been given twice. Sink could mean failure. Sink could mean breakdown. Sink could mean collapse. Institutional collapse. हमने एक सिस्टम बनाया डेमोक्रेसी का, इलेक्शन कंडक्ट कराने का, करप्शन एंटर्ड इनटू द इलेक्शन कमीशन, और पूरा इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा इलेक्शन कमीशन का एक इंस्टीट्यूशन ही जो है वो कोलैप्स कर गया, एंड वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्शंस विदाउट फियर और फेवर. इट कैन मीन लॉस ऑफ डायरेक्शन. खो से गए हैं हम लोग, बस काम किए जा रहे हैं. वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन एज सच. हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हम बस पढ़े जा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सही जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. बस हम पढ़े जा रहे हैं, रोज नोट्स बनाए जा रहे हैं, उनका रिवीजन नहीं कर रहे, कुछ भी अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं आंसर राइटिंग के नाम पे. तो वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन. तो अल्टीमेटली द काइंड ऑफ नेगेटिविटी, द काइंड ऑफ insecurity, these things have came to us in such a way that we have lost the direction. अब ये तो बात होगी चीज़ों को डिकोड करने की. अब आपको देखना होगा कि आफ्टर दिस डिकोडिंग व्हाट यू कैन राइट इन दिस एसे. तो किसी भी एसे में लिखने का सबसे बेसिक सा बात है, बेसिक सा पॉइंट है कि यू शुड हैव अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. अब जो हमने बैटल ऑफ पलासी का इंट्रोडक्शन एनेक्डोट दिया, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्यूटीफुल एनेक्डोट ओवर हियर. लाइक द सेम वे द वे आई सेड दैट इट वाज नॉट द ब्रिटिश बट द treachery, the corruption that has entered into the system of the Nawab, which defeated the Nawab at the Battle of Plassey. ऐसे करके आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अराउंड 30-40 वर्ड्स का. उसके बाद यू नीड टू ओपन अप द मल्टीपल डायमेंशंस अराउंड दीज मीनिंग्स. अब इसके बारे में अगर मल्टीपल डायमेंशंस ओपन करने हैं, आई विल ऑलवेज प्रिफर टू ओपन द डायमेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल पे इस ऐसे टॉपिक का कैसे रिलेशन है, दैट वी विल लर्न. सो इट इज लाइक देर इज सेम एडवर्सिटी. एक एडवर्सिटी है, द सेम एडवर्सिटी कैन ब्रेक वन पर्सन एंड कैन स्ट्रेंथन अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, टू स्टूडेंट्स फेस द सेम एग्जामिनेशन फेलियर. वन ट्रीट्स इट एज अ वर्डिक्ट ऑन हिज एबिलिटी while the another treats it as feedback and improves. सही बात है. एक ही एग्जाम दो बच्चे ले रहे हैं, एक फेल हो रहा है, फेल होकर के एक डिप्रेशन में चला गया और गलत रास्ते में पकड़ लिया उसने सोचा कि पढ़ना लिखने से कुछ नहीं होगा. बट दूसरा बच्चा फेल हुआ, उसने इंप्रूव करा और वो आगे सक्सेसफुल हो गया. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु वेर वेरी पुअर परफॉर्मर्स एट द स्कूल लेवल, बट दे वर्कड हार्ड एंड दे केम आउट टू बी IAS officers. This type of example you can give, that those people did not let the negativity, the insecurity to sink their dreams. You can write about family and relationships. Family and relationships. You can talk about a family surviving financial hardship because members प्रिजर्व ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट. ऐसे आपने बहुत सारी फैमिली देखे होंगे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस जब आता है तो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस. और परेशानियों में जब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं तो अल्टीमेटली वो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है. पर ऐसे भी परिवार हैं जो परेशानियों में मजबूती के साथ उभरे हैं. सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप्स. यू कैन टॉक अबाउट सोसाइटी. Always flow one step by step, starting from individual. The next subset is family. The next subset is society. How it can be connected to society? Very simple. In society,
There are, like the example I gave, the orthodoxical system. Those things, if remain unchecked, if the superstitious beliefs remain unchecked, if the age-old beliefs remain unchecked, if they are not tested on the basis of rationality, they will take the society, that particular community to backwards, back to the back ages. इस तरीके से you can write about society. You can write about education and youth, or after society you take it to polity and governance. Polity and governance. Very simple. External threats become dangerous when internal weaknesses allow them to penetrate. Or take it this way, take it in the context of democratic system. The decline of democratic institutions in countries where constitutional checks and public trust gradually eroded. इस टाइप का एग्जाम्पल दे सकते हैं. यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, दैट द ब्यूरोक्रेसी, द रेड टेपिज्म, एंड हाउ इट इज लाइक हैम्परिंग द डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इन इंडिया. यू टेक इट टू एजुकेशन and youth. How to connect it to education? You talk about that challenges are part of growing up. Internalizing failure is the real danger. You give the example of APJ Abdul Kalam, that how his early career setbacks and could not stop him, and he later achieved many things in his life. So related to youth, how youth can remain on track, how they can stay motivated. You can give the example of APJ Abdul Kalam. Then you can talk about leadership. There is this type of multiple examples you can give. You can talk about corporate world. You can talk about companies, workplaces. You can talk about this, and you can say that if favoritism, if nepotism, if these things are like become the core work culture of any organization, that organization is doomed to fail. And there are n number of organizations like this. A leader who remains calm, you can connect it with leadership. A leader who remains calm during a corporate crisis, instead of allowing fear and blame to spread through the organization, that organization actually succeeds. You give the example, you connect it to the dimension of economy. How you can connect it to economy? You write that there is external economic shocks are manageable when the internal economic structure is resilient. Right? You give the example of Indian economy. अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होगा that there are articles, editorials that keep saying that India's fundamentals are very strong. India has a very strong fundamentals, and those strong fundamentals ensure that even if the world is under crisis, a lot of crisis, we are not that much stressed. हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, बिकॉज हमें पता है हमारे पास ज़्यादा उतना डेट नहीं है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, एंड लाइक वी हैव अ वेरी गुड मार्केट. अगर बाहर कुछ नहीं बेच पाए तो अपने घर में ही बेच लेंगे. सो यू कैन कनेक्ट इट टू इकोनॉमी, दैट there is you can differentiate actually between external shocks and internal vulnerabilities. So external shocks versus internal vulnerabilities. You can connect these. You can also take it to the level of science and tech. भाई साइंस एंड टेक में भी इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? A technology itself is not the greatest vulnerability. Insecure systems are. आपने बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम बना लिया, but you could not put in proper place proper systems that can check cyber threats. तो साइबर थ्रेट से एक एक्सटर्नल चैलेंज है, एंड दैट साइबर थ्रेट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर एंटायर बैंकिंग सिस्टम, कैन लाइक टेक एडवांटेज ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, your softwares, your devices, if that external challenge in terms of
cyber threat is allowed to enter your systems. आप ये बता सकते थे. Very important, you can connect it with IR. A country can withstand external pressure when it possesses internal unity and institutional strength. सही बात है भाई. कोई भी कंट्री, आप यहां पे बता सकते थे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात. कैसे इंडिया एज अ कंट्री इज ऑलवेज वॉचिंग फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. We are able to withstand external pressures because our internal unity and institutional strength is well known. We have a very strong democratic system. That's why no other external power can run any coup on us. And you can compare it with like examples of how US has like tried to interfere in the political systems of other countries. For example, you take the latest example of Venezuela, you take the example of Bangladesh. So our internal strength, our defense, our economy, these things have actually ensured that external pressure does not sink our country as a nation. You can also connect with environment and ecology. कैसे? External environmental shocks become disasters when internal vulnerabilities are high. You give the example of Odisha, that how Odisha was like facing a lot of losses in terms of life and livelihood around 10 or 15 years ago. But these years, very recently, it is the kind of early warning systems or resilient infrastructure Odisha and the government has built, that even the severe cyclones, the loss of lives have actually like reduced. You can talk this way, you can give the example of Odisha, that though there has been vulnerability, but that vulnerability cannot let Odisha sink because we built our system so resilient. तो इस तरीके से मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल एग्जांपल्स यू कैन गिव, और उसी से जितने एग्जांपल्स आप देंगे, जितना डायमेंशन आप ओपन करेंगे, आपका इसे उतना ही अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडिविजुअल लेवल लिया, उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करा और एक एग्जाम्पल दे दिया, फेलियर वाला, एग्जाम में फेलियर वाला. सोसाइटी लिया, उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करा और एक एग्जाम्पल दे दिया, ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीफ्स वाला, सुपरस्टिशियस सिस्टम वाला. लाइकवाइज ऐसे करके अगर आप लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप यू विल गो वन स्टेप एंड इट विल लाइक एंटायर essay will be woven into one sheet. But ये सारी बात जो आप बोल रहे हैं, all these talks are actually supporting this essay topic. All these are saying that external things, when get in, they will actually sink the system. Always remember that in an essay you should always give counterpoints. What could be the counter perspectives in this essay? Very simple. You can say that, okay, external challenges should not be internalized, but poverty can constrain choices. You cannot expect a poverty-ridden child to perform at the same level as a resourceful child is doing. So poverty can constrain challenges. So at the philosophical level, we should not internalize the challenges. But there are issues like poverty. There are issues like social discrimination. You cannot expect these things to just go away. They actually constrain the choices. है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. अब डिस्क्रिमिनेशन अगर होता रहेगा तो कहते हैं ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा. आप और भी एग्जाम्पल दे सकते थे कि नेचुरल डिजास्टर्स समटाइम्स कैन ओवरवेलम इवन प्रिपेयर्ड कम्युनिटीज. आप एग्जाम्पल दे सकते थे केरला के लैंडस्लाइड का, जो like even if Kerala is such an advanced state, but its preparedness was of no use when landslide struck. Then you could have talked about institutional failures cannot always be reduced to individual attitudes. आप नहीं कह सकते कि हमेशा institutional failure किसी individual की वजह से ही है.
बिकॉज ऑफ द, इवन इफ इंस्टीट्यूशनल फेलियर नहीं है, देन ऑल्सो सिस्टम्स कैन सकम टू एक्सटर्नल प्रेशर और टू ट्रेचरी। सिराजुद्दौला इतना खराब नवाब तो था नहीं, पर किसी व्यक्ति के ग्रेड की वजह से उसका सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो इस तरीके से ना यू नीड टू गिव काउंटर पॉइंट्स एज वेल, दैट इट इज नॉट दैट ऑलवेज द एक्सटर्नल issues like external issues do not have any negative impact. See, life will inevitably surround us with storms, criticisms, failures, and uncertainties. We cannot always choose the waters through which we sail, but we can strengthen the vessel within which we sail. है कि नहीं? आप अपने वेसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। You cannot choose the water. आप अपनी circumstances, आसपास की circumstances को कंट्रोल नहीं कर सकते। कहा भी जाता है आप अपने circumstances को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने वेसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। So the greatest protection against turbulent waters is therefore not the absence of storms, but the strength of the ship within. ऐसे करके you could have concluded this essay. और इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो योर एसे कैन एक्चुअली बी वेरी नोटिसेबल, वेरी स्कोरिंग।